भारत और उज्बेकिस्तान के बीच फार्मास्यूटिकल कारोबार को बढ़ाने के लिए दमन में भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया। दमन के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत सरदौर एम रुस्तम बेव ने किया। उनके साथ DIA अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड के MD भावेश दहानुवाला भी मौजूद थे। इस बिजनेस फोरम में मुंबई, वापी, वलसाड और दमन की कई दवा कंपनियों के मालिक और प्रतिनिधि मौजूद थे। भारत के लोग उज्बेकिस्तान में कैसे व्यापार और निवेश कर सकते हैं और दोनों देशों में व्यापार कैसे बढ़ सकता है, इस पर मार्गदर्शन दिया गया। I am sure ladies and gentlemen, Director of Pharmaceutical responded during the last 3 days and diplomatic understanding between United Care, who has taken this excellent. I'm so delighted that Uzbekistan Embassy chose for for hosting us here, and I'm sure that many of you don't know that in Indian medicine. We have history talk about the relationship between the two countries. why we are here, what are the opportunities in this sector, but more generally, I would like to see engineering, be it energy. To develop the industry, not only just the manufacturing, but also regulation. Developed, it's at the same time we have a very strong 4 million, but still the market is the largest market is becoming still Uzbekistan. So it's a post-Soviet Union countries. As you can see, the market is quite big. And even after we got our with our independence, we kept economic community. So they. Came from Oxford Laboratories. I just tried. It's a contract manufacturing. For example, you bring a product and you find a global market. So, is there an international law about the Indian government? Today we just organized a business forum, a pharma business forum between Uzbekistan and India for the first time in the beautiful state of Gujarat. It's very important for us to be present here as Gujarat is one of the centers of pharma industry in India, and it's a very close region to us. We have a sister city connection between Gujarat region and Andijan region of Uzbekistan. Our president has paid a visit to Gujarat to participate in the vibrant Gujarat forum. We brought a very distinguished delegation from Uzbekistan, comprised of representatives of Pharma Agency. They made a presentation on this industry, on the opportunities that exist in Uzbekistan in this industry, and of course, to capitalize on existing ties between our two countries, which span over the millennia. We have a very solid foundation, politically, economically, to take this industry further. Of course, pharma cooperation is one of the pillars of our bilateral partnership. Explore opportunities on both sides, in Gujarat and in Uzbekistan, to take it further. We are a delegation from Uzbekistan, and we came to India to understand the market and then invest in pharmaceutical sector. What Uzbekistan is trying to do is Uzbekistan is developing the pharmaceutical industry. Since India is one of the major player in this global market, we believe we can set up a very strong communications or collaboration activity or partnership activities with India. We have been telling about the opportunities, the incentives that's given in the market in Uzbekistan. So we saw a lot of interest from local manufacturers. They're interested in the Uzbek market. So that's all what we want. We want to now expand the local manufacturing because Uzbekistan can not only cover the local market, which is $3 billion, but Uzbekistan can cover all Central Asia, which is $10 billion. And of course, the second level market is $55 billion, which is a Commonwealth of Independent States. There's a huge opportunity that could be seized together with Indian manufacturers and big investors. One thing is they have a strong brand and the participation globally. And second thing is they understand the marketing and they have a very good experience and technology that could be brought to Uzbekistan. So it will be a mutual beneficial for both countries. Uzbekistan will benefit and Indian business partner will also benefit.
as a deputy Minister of Health and the responsible person for industry development of pharmaceuticals in Uzbekistan, I can promise that we'll be very much committed and dedicated into the development together with Indian partners. And we are very much willing to support, and we will be acting a catalyst role, and we will be speeding up their processes when it comes to investment. Uzbekistan and India has been having a very strong relationship historically. It's over centuries, even you can say more than 10,000 years. It's because there has been a lot of movements from Uzbekistan to India and from India to Uzbekistan. The culture-wise, we're very close to each other, and food-wise, they're also close. So Uzbekistan is heavily supporting Indian politics, and we are having very strong ties. I can even tell you today we have more than 5,000 similar words, so which means historically we're very close to each other, and that's why we believe that Indian investors, when they come to Uzbekistan, they'll be very successful because they can feed to the market very fast, and then politically from our president, they are very much supported, and our president is communicating to us to bring Indian investors to Uzbekistan and collaborate with them. भारत उज़्बेकिस्तान के बीच बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं राजनीतिक क्षेत्र में, चूंकि आर्थिक क्षेत्र में हमें और संबंधों को मजबूत और विस्तृत करने की आवश्यकता है। आज का जो फोरम है, जिसको कि भवेश भाई ने, जो कि CMD हैं यूनाइटेड केप्स प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर, और जो फॉर्मर डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर जो मौजूदा समय में फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ उज़्बेकिस्तान के डायरेक्टर हैं मिस्टर अब्दुल्ला अजीजोव, और भारत में उज़्बेकिस्तान के राजदूत हिज एक्सेलेंसी रुस्तम बाएव, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। उसी के साथ साथ जो हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बड़ी तादाद में, वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो आज की इस फोरम का उद्देश्य है कि आपस में बातचीत करके उन संभावनाओं को तलाशना जिससे द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक वृद्धि हो, और ये दोनों देशों के उद्यमियों के लिए विन विन सिचुएशन। संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ, दमन के लिए मतलब है ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दमन में यूज़बेकिस्तान के जो है एम्बेसडर और वहाँ के फार्मा सेक्टर के जो है डायरेक्टर लोग आए हुए हैं यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, सर्च करने के लिए, और बहुत अच्छी डिस्कशन हुई उन लोग से। तो आई थिंक हमारे समझ से, और फार्मा सेक्टर को जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे जो प्लेग भी हुआ था उसमें इंडिया जो है बहुत वाइटल रोल रही थी। प्लेग वैक्सीन जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है हम लोग प्रोवाइड किए थे। तो उस रिगार्डिंग जो है हमारे समझ से एक टाइप अगर यूज़बेकिस्तान होती है, जैसा इन्होंने ब्रीफिंग किया, बहुत सारी चीज़ें एग्जम्प्ट है वहाँ पर। तो एक आपस में बैठ के और जो है बातचीत करके और एक नया संबंध बनता, संबंध तो पहले से है ही। हमारे देश के जो हैं तेजस्वी जैसे अभी प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे दमन में जो है प्रशासक हैं, इतना बढ़िया दमन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, उस बेस के ऊपर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ भी वो लोग इन्वेस्ट करें, दमन में भी, और हम लोग भी जो है वहाँ पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक नई जो है शुरुआत कर सकते हैं।